So, good morning, students. Today we are going to further explain our chapter light. Okay, as you have already know that what is light and what kind of sources of light we have. But to sum up the your previous class, let me tell you the light is a form of energy that we cannot see, but we can see the object on which it falls on lights up. सो इसका मतलब ये है कि आप लाइट की जो रे होती है आप नॉर्मली उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं देख पाएंगे उस चीज लाइट की रे को तब जब तक वो किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाएगी. ओके, नाउ द सेकंड थिंग वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास इज दैट द सोर्सेस ऑफ लाइट. सो वी हैव टू सोर्सेस ऑफ लाइट. फर्स्ट इज अ नेचुरल सोर्स एंड द सेकंड वन इज human made source. So some of the natural sources of light example are sun and then stars, and the main natural source of light for us is sun, whereas stars are also natural source of light, but they are very far away from us, so they are not able to give the proper light to us. Okay, now whereas moon is actually the reflection of sunlight. Okay, now the second source of light is human made light, and you can see all around you that light bulbs, tube lights, fluorescent bulbs, candles, these are the human made sources of light. And the important thing about light rays is they travel in a straight line path. They travel in a straight line path. How they travel in a straight line path. अगर आप कोई भी लाइट रे अगर जाएगी, अगर आप लाइट रे को उसको ट्रैवल करवाओगे, सो इफ यू हैव अ एग्जांपल, लाइट रे को अगर आप ट्रैवल करवाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी. अगर कोई भी हर्डल आएगा बीच में, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो क्या करने लग जाएगा, अब वो अपने आप क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वो इस हर्डल को पार नहीं करेगा. इट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट कि वो किस टाइप का है. देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट already you guys know that. First is transparent, second is translucent, and then there is ओपेक. ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर लाइट रे आपकी जा रही है तो उसके रास्ते में कैसा ऑब्जेक्ट आ रहा है. अगर ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग, उससे अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, तो इट विल रिफ्लेक्ट. तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके पाथ में तो ये अपने आप बाउंस बैक होने लग जाएगा. इट जस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइक बाउंसिंग ऑफ अ बॉल फ्रॉम अ वॉल. अगर जैसे आपका बॉल जो है बॉल से टकरा के बाउंस बैक होके आपके पास आता है, वैसे ही आपकी लाइट रे भी क्या करती है, बाउंस बैक होके वापस आ जाती है. इट डिपेंड्स अपॉन द object as well. Okay, now the second thing is we are going to learn is that there are two type of reflecting surface we have. First is smooth surface and the second is uneven surface. If we have a smooth surface, then this ray is incident ray, and then it is जो reflect होके जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, reflected ray. The ray which comes from the source of light is called the incident ray, and the ray which bounce back, which come after bouncing back from a wall or a surface, is called a reflected ray. So if we have two kind of reflecting surface, first is smooth one and the second one is uneven one. So स्मूथ से देखो कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस. देखो नॉर्मली आपकी जैसे इंसिडेंट आई है वैसे ही आपकी रिफ्लेक्ट भी हो रही है. वेरएज इन अनइवन सरफेस रिफ्लेक्टेड, जैसे ये रेस का होता है, ये हमारे एरो जो है क्या बताते हैं, एरो टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ रे. आप देखो इसमें जो है इंसिडेंट रे ये दिखा रहा है. इंसिडेंट रे का एरो मैंने नीचे की तरफ बनाया है ये दिखाने के लिए कि आपका जो लाइट रे है वो नीचे की तरफ जा रहा है. रिफ्लेक्टेड रे का जो एरो है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि वो आपको बताने के लिए कि ये आप रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है. Okay, so now we are going to learn about the images these rays, images the object and the light ray formed. There are images. It is an impression of object created by the